is going to invite them, and this is going to be a panel discussion, and I'm so glad that some of the young doctors are here. And it is found in Pakistan that very few young physicians actually aspire to become family physicians, and this is an excellent opportunity. And we have invited the leaders in family medicine who have vast experience and they have specialized in this branch or field of internal medicine, the family medicine. So no formal presentation will be needed or required. The family physicians have been given 4 questions. Obviously the questions were given to sum up their thoughts, and so that they can make a brief panel discussion or remark. Basically, we will be taking questions, and then Dr. Hina will direct them to the chair of panelists, and they will then briefly answer it. There will be no formal presentation during this session. You may dislike it, but that is what the format is and has been decided beforehand. Unfortunately, there has been a misunderstanding, I don't know how, but that is the format, and we would like to involve all the young participants who are here to get actively involved. Thank you. All over to Hina. Thank you very much, Professor Aftab Mohsin, for the introduction and providing family medicine fraternity this opportunity in your conference on day 1. I would like to invite all the panelists one by one on the stage. The first guest I would like to invite is Dr. Abdul Jaleel Khan. He's a consultant family physician with many years of experience in the NHS. He also holds a fellowship in general practice and is also a fellow of Public Health England. He's acquired 2 awards in leadership from the UK. My next guest is Dr. Tariq Mia. He is the president of Pakistan's Academy of Family Physicians, a very dynamic personality who's been very active and very vocal about quackery and antibiotic stewardship. The next guest is Dr. Arshad Hamayu. He belongs to the Family Medicine Education Committee from Lahore, again hugely involved with Pakistan Medical Association in conducting academic sessions, regular CMEs, weekly basis. Another guest is Dr. Chima, Altaf Chima. He is the Senior Vice President of the Pakistan Academy of Family Physicians and has a very lucrative practice in a nice area in Lahore. Again, he's actively involved in a lot of academic activities, including guideline updates for family physicians. Mind you, there are certain areas of Punjab where GPs do not even have access to CMEs, and South Punjab is one of the areas where this deficiency is identified, has been identified, and still lacking. So thank you, gentlemen, for coming here. I'll just put forward some of the questions. Can we have that slide for the questions, please? So we hear every now and again that family medicine or primary care in a broader sense is the backbone, but the backbone seems to be missing, and we have identified 4 questions, and we will ask 1 question from each of the panelists here. I would appreciate if we stick to just 5 minutes for the sake of the time constraint. Okay, the next slide, please. Thank you. So these were the 4 key questions that were identified, focusing on family medicine stroke primary care. And we aim to cover most of the questions that the public might have, but we would prefer this session to be interactive. So if you have any questions, just let us know at the end. What are the challenges faced by family physicians? Can I take this question from Dr. Tariq Mia, please? Because I know you've been very vocal on a lot of platforms about it. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you very much for putting this question to me.
Basically, the family medicine, I think according to WHO, 70 to 80% patients are being seen by the family physicians and 20 to 30% by the other system of medicine. This big chunk of people which are seen by the family physician, but unfortunately, like other countries in the world, the primary care physician and the family physician, I think they are the most neglected field, very important but most neglected field in Pakistan. This is the reason that our health delivery system is not up to the mark and it is not meeting the challenges of present day. There is no, what is the reason behind? The reasons are that during undergraduate training, nothing is taught about family medicine, neither they are posted in the family physician's clinic so that the young graduates can have a better understanding what the family medicine is. Unfortunately, our seniors, they are the main hurdles for not promoting family medicine in Pakistan. You see, you just take the example of NHS, UK, Australia, even our neighbor Iran, Canada, America. Nobody can go to tertiary care hospital until unless he is being referred by his primary care physician, his family physician. In UK, even the consultants working in different tertiary care hospitals, they cannot have their medical checkup without being referred by their family physician. So I think this is the main thing which is lacking in Pakistan. The other thing is that the people, we think that this is primary, secondary and tertiary care. We think that the primary means the smaller one and tertiary, secondary means the intermediate and tertiary means the last one. So this is the main problem in conception of family medicine. Family physician, he is a whole body doctor. The consultants are a doctor of a system. So I think they are equally important. And you see, the second problem in Pakistan is that there is no proper training that who should be family physician. Once you go into the field, anybody who has done house job in just one subject, he can go and he can open his clinic. Nobody is going to check whether he is competent enough because he has to see the patient from head to toe. So this is the main problem, that we are not promoting family medicine, which is very, very essential. I will just give you two examples. That during there was an epidemic in Lahore in 2011 of again there is a pandemic. So the family physician, they took the burden of disease and we trained our family physician on our own, not the government. So they have served the nation. And if they were not trained and they were not competent enough, so there will be a huge burden on tertiary care hospital. You see, in tertiary care hospital, if you see 80% of the patients which are from the primary care, they are being seen by the consultants, so they cannot do justice to those patients. If only 10 or 20% which genuinely needs the tertiary care, if they are referred to the tertiary care hospital, I think our honorable consultants, they can do justice to their job and they can see the patient. The other most difficult problem for the family physician is that there is no proper postgraduate or after their job training. So medicine, as you know, is changing day by day. Every day there are new guidelines, and those who have done MBBS, their graduation 20 years back, and they are not connected with any CME programs, I think their knowledge will be
almost 20 years behind, so they will be doing practice now almost equal to quacks. So the postgraduate training and the CME continuing medical education program and at the level of undergraduate the training of and the departments of family medicine. I think these are a few things Thank which you. we have to, if we want that we should meet the comprehensive needs of the country and the health for all, for the poor masses. That is possible only if we give undergraduate training and then postgraduate and then continuing medical education. These are few points which I want to highlight. Thank you so much. Thank you so much for your points. Thank you. Before we proceed with the panel discussion, I have spotted Dr. Shaila Naseem. She is the one of the key people of College of Family Medicine, Pakistan, an important institution for the entire country. Ma'am, I would like to invite you as a chairperson for this session, if you can join us on there. Thank you. Madam is very proactive in doing research work. She's currently holding an important post in Wonka, South Asia as well. So thank you for coming. I don't know if Dr. Unab Khan is with us in the hall. If she is, can she identify herself? Okay. Is Dr. Shahzad Ali Khan here? Right. Okay. No worries. Thank you. We'll move on to the next question, and can I take this question, ask Dr. Abdul Jalil Khan to answer it. Do you think family medicine is getting its due recognition? And if not, why? And if you can just limit yourself in 5 minutes, thank you. Okay, thank you very much. So do I have the full 5 minutes? Okay, so when it comes to recognition, I can ask the same question from all of you. I think Dr. Tariq Aziz has already highlighted it. No, family medicine is not getting its due recognition. And the reason being what? Ages ago, it's already been decided. If you guys know the history of family medicine or the history of medicine, Professor William Darley, who was an internist, who was an internal medicine specialist. So again, we are sitting here in an internal medicine conference. He, in 1961, he thought that fragmentation of healthcare into multiple specialties is causing fragmentation of patient care. So yet there is a need for a specialty where someone can provide that comprehensive, holistic care and take patient as a whole, or what we call a whole patient care or whole patient-centered care. So, no, family medicine is not getting its due recognition. What could be the reasons? 1992, our colleague from Aga Khan might be sitting here in the hall. CPSP recognized family medicine as a specialty, and a proper FCPS program was started in family medicine. Yet, we still have around 50 to 60 CPSP graduates in FCPS. Correct me if I'm wrong. I'm talking about FCPS. Luckily, we have a lot of MCPS family medicine program. Now, why we're not getting the recognition? The reason is we, as clinician ourselves, we are not giving it the due respect, the respect which family medicine need. Dr. Tariq Mia talked about NHS. I worked in NHS for 16 years, 7-8 years as a family physician. There, the GP have the same respect, rather more respect than any other specialty. In Pakistan, obviously when we talk, we need to incentivize it. Now when we talk about incentivization, people talk about money. So money is not incentive. What we need to do if we want to recognize it, I give normally people what I call Dr. Khan's 5R formula. So the first R is for respect. We need to give the same respect to this specialty like any other specialty. We need to recognize this as a specialty. Again, it's been recognized. There is CPSP programs, but why people are still not coming? So again, because we're not rewarding it, the other R is reward. We need to give the same reward. Just like any other specialist, you create job opportunities, you create district level posts, you create faculty positions, and then people will, the youngsters who are sitting here, they will come to this specialty. Now, if you do all these, then you will be able to retain them. Otherwise, what's been happening?
We have started this diploma family medicine program, which is only a 1-year diploma program. And after training a couple of batches, 3-4 people left. Few got jobs in Canada even. Few got jobs in Kuwait, Gulf. The same is with CPSP. People do MCPS and they get better jobs in Gulf and they leave the country. So we are having difficulty in retaining them because there are no opportunities here. So if you give all these fours, respect, recognition, reward, and you will be able to retain them, and then they will give the result to the system. Now, we all want to improve the healthcare system. We decided to bring healthcare Sehat Sahulat card program, which is health insurance, yet we have no gatekeeping role of family physicians. So if you want to recognize this program, if you want to give the same respect to the family physician, then they will be able to deliver, and then your primary care will be able to improve. I know it's the next question, someone else will be able to answer it, but if you want to bring a comprehensive, cost-effective healthcare model, the only way forward is to gatekeep this by family physician, which means all the referrals, all the hospital admissions, all the preventive medicine, all the rehabilitative medicine, that should come under the umbrella of family medicine. So we need that recognition. Now, I can give you a few good news as well. Yes, in Pakistan, things have been moved forward in the last 3 years. And Alhamdulillah, at PMC level, we managed to get, Tariq Mia mentioned earlier about undergraduate training of family medicine. We managed to get 100 hours in undergraduate curriculum. And in KPK, we managed to implement it by Khyber Medical University. So Alhamdulillah, in all 17 medical colleges of the Khyber Pakhtunkhwa province have now got 100 hours implemented as family medicine at the undergraduate level. And hence we will have now faculty positions at all the medical colleges. But we still need recognition for the service provider level. That means our BHUs are still led by not even doctors. In a lot of places they have medical technicians. Everywhere in the world, primary care is always consultant led. So that's what we need. And for service provision, obviously we need the government to recognize this specialty and make it a compulsion. Anybody who wants to open a GP practice, anybody who wants to work in primary care, or any BHUs or RHCs, that should be led by somebody who have been trained in family medicine. Yet there is another model. I was talking to somebody, I think the government is working on this as well to achieve universal health coverage. They are thinking to contract out the primary care to local GPs who have qualification in family medicine. They have even calculated it, they have figured out the cost, and they are thinking the cost should be around $5 to $6 per registered patient per year. So if that got implemented, I'm sure most of these trainees or students sitting in the hall, nobody would want to go to any other specialty. Yet even I'm ready to open a practice with 20,000 population and the government paying me that much money. And trust me, that's still more cost effective. There's still going to be less money spent by the government than they are already spending in the current primary care system. Yet it will improve the referral system, it will improve better care to the patient, and it will help in reducing the cost of healthcare. Thank you. Thank you very much. I know there are plenty of the younger lot sitting here. Are there any, we are open to any questions, so I'm going to open the microphone. Unko de dijiye, please. We have a good panel of the academic, researchers and practicing physicians, so yeah. Samir. Listen. Hello. Do you guys
Meanwhile, let me ask a question while you're coming. You can come here. Um, Thank you so much. It was a wonderful discussion. I think the biggest challenge to family medicine in Pakistan is there's no doubt that family medicine must be the backbone of any adequate healthcare delivery because they are the first line of defense. They have the opportunity to intervene much earlier than we are. People don't present to us with diabetes or hypertension. They present to us with complication once they are symptomatic, while most of these chronic diseases are asymptomatic for a very, very long time. And also the influence of family physician is not only a physician, he is a family member of so many people who are, and they have much more influence on the families for prevention, which we don't have because people come to us too late in the tertiary care. So I just give you one example. When I was working in UK, the control rate of hypertension was around 7.8% at that time. And then NHS decided to give, and people would come with some trauma or whatever, they would take a blood pressure. And once they would diagnose it, they would was incentivized. And just in about 7 years, the control rate of hypertension went up to a hefty 19%. So that's just one example. In Pakistan, the large, of course at UHS, we do have a very active family medicine department, and the moderator, Hina, is holding the fort for us. Our family medicine department is based at Gujranwala campus. We have many campuses. But the main challenge is that we are acting in parallel, and there's no integration horizontally with the government sector. They cannot refer, they cannot visit the government sector, or their patients just walk in, they are not referred, and they are not referred back to them. So unless the government takes a very serious note of this and integrate family medicine into mainline, because that is, the public sector is the base of the pyramid. Private hospitals, they are the tip of the pyramid. So I think we'll have to somehow motivate the government, and we have been trying with all my friends sitting on the stage right now, and all my life we have been doing, but so far miserably failed. We are working in parallel and there is no horizontal integration. So we have to devise a way how to horizontally integrate it with the public sector. And once we do that, then it will be a win-win situation, not for family medicine alone, but for the public and patients as well. Thank you. Thank you for your comments, sir, and always supporting family medicine. So it's working now. Hi, my name is Dr. Muhammad. Sure. I'm a postgraduate resident of internal medicine. So my question is, I'm just done with the training. I don't want to continue my internal medicine. So if I have to pursue the family medicine, what are my opportunities are, and how should I pursue it? And how can I, like later I just want to ask, where can I stand after 10 years in family medicine? So that's are the basic concepts I just want to clear out. Good Thank you. question. Yeah. Can I? Thank you very much. First of all, I must appreciate the dynamic leadership of Pakistan Society of Internal Medicine for involving all the chapters of family medicine and having this session, very important session. And the topic is that backbone of healthcare delivery system. Of course, family medicine is very important, and I think the lacking is that there should be a structured training at the undergraduate level, structured training at the postgraduate level, and structured involvement of family physicians in healthcare delivery system. And this is very important. The other thing, does anybody who has done his MBBS or even not done MBBS, just sitting quacks, so many quacks are sitting there, they can open their clinics and start practice. I think to open a clinic for a practice, there should be a licensed family physician, and there should be some criteria and some SOP, some protocol
to start the practice as a family physician. And I think family physicians are doing their CME program. I think that since the time of Dr. Bashir Malak in 1980, he started the CME program, regular weekly CME programs. And I think that this program can be compared with any part of the world, that the family physicians, they are updated to the latest development in medical science due to these CME programs. And now you know that the different segments of the family medicine, they are doing their CME activities. And I think that as asked by the question that if someone wants to start the family medicine, I think that family medicine is the holistic medicine, integrated medicine, as told by Professor Javed Akram, that it is the holistic medicine, and we cater the 80% the needs of the family physicians, and we enjoy being a family physician, and I am at least proud of being a family physician, because I think that the family physician are the real doctor, because they cater the needs from head to toe. And any problem, if a family physician if any patient is having any problem, the family physician can take care. Thank you. Thank you very much for your answer. Yes, please. I am Dr. Saeed from Lahore. पहले तो अपॉलोजी करूँगा कि इंग्लिश में नहीं बात करूँगा, और मैं अपनी बात को समझाने के लिए अपनी ज़बान यानी उर्दू में ही बात करूँगा. गाइडलाइन देनी चाहिए लोगों को. पहले नंबर पे बताना चाहिए कि पहले नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है कि क्यों वो फैमिली मेडिसिन में आए, फैमिली मेडिसिन के क्या है. जिस तरह अभी वो हमारे यंग डॉक्टर ने पूछा कि मैं इंटरनल मेडिसिन छोड़ के क्यों फैमिली फिजिशियन बनूं, तो इसका अभी हमारे पैनलिस्ट को भी, हमें भी और उसको भी पता नहीं हम कैसे बन गए हैं डॉक्टर, हम कैसे फैमिली मेडिसिन में आ गए हैं, कभी हमने खुद नहीं सोचा. और आज अब जब हम इस कैरियर को आखिरी सेशन में हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों उधर क्यों चले गए, या ये क्यों नहीं किया या वो नहीं किया. एक बात. दूसरा, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मोर देन 80,000 जो फैमिली फिजिशियन है रिकग्नाइज्ड हैं. अब आप इनको जो क्वालिफाइड जिसको लेवल आप देते हैं कि कम से कम ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 3 या 4 साल की हो और इतने लोगों को आप ट्रेन करें, तो फिर वो इन सब को रिप्लेस करेंगे. एक बात. दूसरी बात, जो रिकमेंडेशन है किसी भी स्पेशलिटी की पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल साइकेट्री की ले लें, साइकेट्री का प्रेवलेंस पाकिस्तान में जो उनकी सोसाइटी गाइड देती है वो मोर देन 15% है. अब वो जो पूरे साइकेट्रिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में वो 400 भी नहीं है. इसी तरह एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो नहीं है. क्या आप ये चाह रहे हैं कि हम उनको कम करके ये बढ़ा दें या ये बढ़ा के वो कम कर दें? ये तो हो नहीं सकता. हमारी ये जो रिक्वेस्ट है ये अपने इसमें गाइडलाइन दी जाए कि जो फैमिली फिजिशियंस काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग पे तवज्जो दी जाए, उनकी CME पे प्रोग्राम पे तवज्जो दी जाए. फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइकेट्रिस्ट की साइकेट्री की प्रैक्टिस कर रहा है तो डॉक्टर साहब को ये समझा दिया जाए, यहाँ तक ट्रेन कर दिया जाए कि ये उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है और इसके बाद रेफरल कब होना है. आखिरी बात इसमें क्या होनी चाहिए, हर स्पेशलिटी में, डायबिटीज़ में ले लें, किसी में ले लें, पेशेंट जो है वो फर्स्ट विंडो या फर्स्ट टारगेट या फर्स्ट गेट कीपर अगर फैमिली फिजिशियन है तो वहीं से पेशेंट जो है वो सही लाइन पे चला जाए और रेफरल चला जाए. और अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो फिर हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं. वरना हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे, खुद भी ब्लेम करते रहेंगे. तो आज हमें एक कंक्लूजन इस फोरम से हमें मिलना चाहिए कि हम इस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाएं ताकि हम इसको अचीव कर सकें, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर दें. थैंक यू. Thank you, Dr. Saab, for a very honest response and opening the floor for more conversation. Dr. Saab को microphone दे दें, please. जी, sir. My name is Shaukat Javed and I am student of medical journalism. Thank you very much for giving this opportunity. With due respect to the panelist, Dr. Tariq Ming has already pointed to some of the problems which the family medicine faces. But the ground reality you should also know.
majority of the GPs which are practicing, believe you me, they have never bothered to clean the table on which they practice. You go and see it. They don't know how to write prescription. They don't have proper waiting place for the patients. And you demand respect. Nobody should demand respect. You need to earn respect. If I go back to 70s, Dr. Naqvi, S.H. Naqvi in Karachi, Bashir Malik in 80s, they never asked for it. They were given due respect by the specialist. So they never asked for it. You have been given respect, you have been recognized, you are sitting on the table because of your work. It's on us, on you, to prevail upon your colleagues who are doing general practice. They should improve themselves, improve their practices, improve their clinics in working, they will earn respect. Thank you. This has been a breakthrough in the conversation basically. जी सर का comment दे देते हैं. जस्ट एक मिनट इनका जवाब थोड़ा सा. हम हमेशा उलमा को कहते हैं जी कि इन्होंने पाकिस्तान में इन्हें पता ही नहीं है बात कैसे करनी है, इन्हें पता ही नहीं है ये चीज़ कैसे है. हम उन्हें हमेशा इल्ज़ाम देते हैं कि हमारे मुल्क के उलमा जो हैं उनका लेवल ये है. कभी हमने सोचा कि हम इंडक्ट कौन से करते हैं उलमा? यही हाल फैमिली मेडिसिन का है. अगर यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती, प्रॉपर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होती, बाद में उनको सही प्रॉपरली गवर्नमेंट उनको ट्रेन करती, और ये सारी चीज़ें जो आपने कहा है वो हमने इनपुट तो दिया कुछ नहीं, हम आउटपुट चाह रहे हैं उनसे. ठीक है जी. तो जिस हाल में अंदाज़ा करें हमारा मुकाबला क्वैक से है. एक तरफ क्वैक बैठा हुआ है जो हमसे कोई कम से कम 10 गुना ज़्यादा है. उनसे हमने मुकाबला करना है, हमने रेट अपना उनको कम्पीट करना है, और सर्विसेज हमने देनी है क्वालिफाइड डॉक्टर की. पेशेंट हमारा समझ रहा है कि डॉक्टर जो एक फैमिली फिजिशियन है या क्वैक है वो बराबर दोनों डॉक्टर हैं. तो ये कुछ चंद एक ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आपकी सजेशन वैलिड है. थैंक यू सर. जी डॉक्टर मिनहाज कदबाई मेरा नाम है. यहाँ बात हो रही है बेसिकली फैमिली फिजिशियन एज ए रोल मॉडल ऑफ अ गेट कीपर. So it's very important that we establish that idea of a gatekeeper within our system. प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के बराबर है. सो मैं एक सजेशन प्लेस करना चाहता हूँ इस सूरत हाल में कि जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रोवाइड कर रही हैं हेल्थ केयर इंश्योरेंस, अगर फैमिली मेडिसिन की जो एसोसिएशन है वो उनके साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट डेवलप करे जहाँ पर ये कि रियल जो हम गेट कीपर की बात कर रहे हैं कि रेफरल बेस्ड सिस्टम हो प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से. सो अगर वो एक प्रोजेक्ट डेवलप करें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के बाद तो इस्टेब्लिश वेरी सी के जो गेट कीपर मैकेनिज्म में कैसे सक्सेसफुल डॉक्टर शैला एंड अदर्स इन इस्टेब्लिशिंग दिस प्रोजेक्ट. एक तो ये बात. दूसरी ये कि बात यहाँ पर हुई एक और क्वैकरी के हवाले से. सो क्वैकरी जो है ना वो एक हम मेनिया से बेसिकली यहाँ पर, और अनफॉर्चुनेटली एज अ सोसाइटी वी हैव नॉट बीन एबल टू डील विद दैट. सो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम क्वैक्स को या तो एक्सक्लूड कर दें सिस्टम से या इंक्लूड करें उनको, मगर क्वैक्स आर रियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर द कम्युनिटी would like to see them because they are really available at the time of their needs. So हम एक ऐसा कोई solution devise करें where the quacks are trained to an extent under the family medicine umbrella, whatever it may be, and they are supervised by the family care physicians. That could even give incentive to the people who want to work. Or it's up to you what you want, but this is my suggestion. Thank you very much. थैंक यू सर. जी सर. जी आप सर एक मिनट अगर मैं आपको Professor Shehzad Ali Khan is here. He's the VC Health Services Academy, Islamabad. Thank you for gracing us with your presence. If I can ask you to come on the stage, please. Thank you. जी सर. Can I start? Panelist. जी. First of all, thank you very much, organizers, for inviting doctors from various parts of the country, and especially the family medicine doctors, and posting them on the stage. और उसके लिए भी यहाँ से भी एक हमें बताया गया कि जी आपके लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज आप स्टेज पे बैठे हुए हैं. यहाँ पे 4 क्वेश्चंस डिस्प्ले हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फैमिली फिजिशियंस? बेचारगी कि जी आपको क्या क्या कोई मसले मसाइल हैं तो बताए जाएं. क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक इट इज गेटिंग इट्स ड्यू रिकग्निशन?
आप बताइए कि क्या आपको कोई रिकग्निशन कोई मिल रही है? नहीं, बेचारगी, पसमानदगी। नंबर 3, हाउ डू यू थिंक वी कैन प्रमोट फैमिली मेडिसिन? मैंने 35 साल लाहौर में प्रैक्टिस कर ली, डॉक्टर तारिक मियाँ ने 40 साल, और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने 50 साल, एंड वी आर स्टिल इन द प्रमोशनल फेज। हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ कैन वी प्रमोट फैमिली मेडिसिन? क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द फैमिली फिजिशियंस आर डूइंग जस्टिस टू देयर जॉब? पहले 4 सवालों में पसमानदगी और ये सारा कुछ बताने के बाद आखिर में कटहरे में भी फैमिली मेडिसिन के लोगों को पूछा जा रहा है कि आप अपनी जॉब से जस्टिस कर रहे हैं। अच्छा, जस्टिस क्या है? सुबह से, बल्कि अगले 3 दिन का प्रोग्राम मेरे सामने है, मैं बड़े ही अदब के साथ, बड़ा हम्बली, बहुत दुखी दिल के साथ मैं ये ऑर्गेनाइजर्स से पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि क्या कराची में आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट नहीं है? यूएचएस में फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट नहीं था? फातिमा मेमोरियल लाहौर में फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट नहीं था? आपने किसी भी डिपार्टमेंट से एक भी स्पीकर नहीं लिया एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सके। सर मॉडरेट, लेट मी फिनिश। यहां से सुबह से इतने पैनलिस्ट, आपने किसी भी पैनलिस्ट के साथ आपने फैमिली मेडिसिन के बंदे से ये पूछा कि जी आप भी बताइए कि आप डायबिटीज कैसे ट्रीट करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है विद SGLT2, with GLP-1 analogs, with the hypertension, all that. So recognition तो मैडम तब मिलेगी, हमारे वो टीचर्स, हमारे जो मोहतरम असातिज़ा कराम यहाँ बैठे हैं, जिनको देख के, जिनको हमने लर्न किया, ये हमें रिकग्निशन देंगे तो रिकग्निशन मिलेगी। अदरवाइज फैमिली मेडिसिन, यहाँ पे एक बच्चा था जो कह रहा है कि मैं इंटरनल मेडिसिन में, बेटा मेडिसिन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस मुल्क में आप सिर्फ क्लिनिक करेंगे, आप जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनसे उनके हाथों ब्लैकमेल होंगे और नोबडी वुड बी ऑन योर बैक। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं डोंट वांट टू टेक मच ऑफ द टाइम, फैमिली मेडिसिन को ड्यू रिकग्निशन दी नहीं गई इसी कम्युनिटी के साथ, अदरवाइज वी कुड हैव डन वंडर्स। और 2011 में, फिर कोविड में, फिर अभी अगेन डेंगू एपिडेमिक्स के अंदर वो वंडर्स लोगों ने देखे, और इसका इतराफ श्रीलंकन डॉक्टर्स ने जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे, मैं उसके बाद बात खत्म कर दूंगा, उन्होंने कहा कि जब हमने पाकिस्तान में फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स को देखा तो हमें हसरत हुई कि काश अगर इस तरह के फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स श्रीलंका में या थाईलैंड के अंदर होते तो वहां पे डेंगू से इतनी अमवात ना होती। आप सबका बहुत शुक्रिया। Thank you. Just to get the record straight, Dr. एक मिनट सिर्फ उसका जवाब मुझे देने दें। ताहिर चौधरी साहब ने बड़ी जज्बाती बातें की एंड वी अप्रिशिएट इट, लेकिन हकीकत यह है कि बिलीव मी, ट्रस्ट मी, पूरा मुआशरा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है फैमिली मेडिसिन के फिजिशियंस को, और हम भी बहुत ज़्यादा देते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने एक सबसे बड़ा जो फोरम, सबसे ज़्यादा टाइम दिया हमने फैमिली मेडिसिन के इस डिबेट को दिया है, और हमारे सर आंखों पे हैं। देखें, इसमें कोई वी आर नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर, वी आर गोइंग टू कम्प्लीमेंट ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली मेडिसिन और हमें एक जैसा सोचना है, हमें एक तरफ खड़ा होना है, बीमारियों को दूसरी तरफ खड़ा होना है। इट इज़ नॉट के जो कंसल्टेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं ज़ाती तौर पे आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली फिजिशियंस। बिलीव मी, मैं अभी इस मोहम्मद साहब के बैठे थे, मैंने इन्हें कहा था जी मेरी मुशाहिदा ये है कि जब भी कोई भगवानपुरे से
بیچز بھیجنے ہیں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے. مگر میں میاں صاحب آپ نہیں تھے اس میں انوالو تھے, مگر میں عرض کروں کہ اس کا کوئی جواب نہیں آیا. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی جواب اپنے جو فیملی فزیشین ہیں ان کو یہ مارک کریں کہ, اور یہ پھر اپنی یونیورسٹی کی طرف سے انہیں کہیں گے کہ اگر آپ لوگوں نے بیچز جو ہیں ڈاکٹرز کے ادھر نہ بھیجے تو ہم آپ کی مطلب جو پوزیشننگ ہے اس کے ایک ڈیفیکٹو ہو جائے گی آپ کی. دوسری پروپوزل میں نے یہ دی تھی کہ چونکہ اگر کوئی فیملی فزیشین کی کوئی چیئر پروفیسر بنایا جائے یا تو پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹل اٹ از اے ہیوج, ایک فیکلٹی چاہیے اس کے لیے, پروفیسر چاہیے, ایسوسیٹ پروفیسر چاہیے, دوسرے سارے چاہیے. تو ہم نے کہا کہ اس وقت پی ایم ڈی سی کی طرف سے پروپوزل گئی کہ ایک اس وقت آپ کا ایک آدمی ہم جنہوں نے ایف سی پی ایس کیا ہے یا ایم سی پی ایس کیا ہے, ہم ان کو ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن میں لے لیتے ہیں, اینڈ دین ہی شوڈ ڈو دس پیڈ ورک, اور اس کو بڑھا کے پھر ہم اس کو بہت پھیلا دیں گے. تو یہ آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں کی عزت ہمارے دلوں میں جتنی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کی. Thank you so much, آپ sir. لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. Thank you so much. I think one of the panelists would like to give a comment, and then I'll come back to you, Farhan. Let me just explain. وہ بات کہیں اور چلی گئی. Specialty care is important. Specialty care is important. You need to have a very good integration. میں آپ کو باہر کی بات بتاؤں جو پوچھ رہے تھے. So in UK, 50% of the medical students should compulsory go to general practice. And the rest of the 50% should go to other specialties. پاکستان میں چونکہ پرابلم کیا ہے کہ ابھی تک سروس لیول پہ فیملی میڈیسن کا کوئی کیڈر نہیں بنا, تو اس لیے یہ پرابلمز آ رہی ہیں. لیکن کافی کام ہو گیا ہے. میں ان سب سے جونیئر ہوں کہ مجھے پاکستان آئے ہوئے صرف 3 سال ہوئے ہیں, لیکن 3 سال میں وی مینیج ٹو گیٹ 100 آورس. اسٹوڈنٹ اب اس طرف آئیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا اف یو ڈو ایف سی پی ایس ان فیملی میڈیسن, یس یو کین بی اے فیکلٹی ان اینی میڈیکل کالج. یہ آلریڈی اپرووڈ ہو چکا ہے, تو آپ کو پوسٹ بھی ملے گی. یو کین ورک ایز یور اون پریکٹس, آپ کھول سکتے ہیں. گورنمنٹ جس پہ کام کر رہا ہے کہ پرائمری کیئر کو مل سکتا ہے, لیکن جیسے اس نے کہا نا کہ بھئی if you want to bring change you should bring your own change. یہ تو خیر وہ کنڈکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ if you want to bring change bring your own change. تو لائٹر نوٹ پہ کہ چینج لے کے آنا ہے, but for that we need to change this attitude. ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جیپنیز کا کہ if one can do it I can do it, if no one can do it I must. یا حبیبی ہاؤ کین آئی ڈو اٹ. تو ہمارا یہ والا ایٹیٹیوڈ جب تک ختم نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا. لیکن انشاءاللہ ریکگنیشن بھی آ رہی ہے, گورنمنٹ لیول پہ ریکگنائز بھی ہو رہا ہے. اور جس طرح سر نے کہا نا صحت کارڈ, جب صحت کارڈ امپلیمنٹ ہوگا ہیلتھ انشورنس, یو کین ناٹ رن ہیلتھ انشورنس وداؤٹ اے پراپر ریفرل سسٹم. ریفرل سسٹم کے لیے آپ کو گیٹ کیپر رول چاہیے. گیٹ کیپر رول کے لیے فیملی میڈیسن ہوگا. فیملی میڈیسن میں جاب اپرچونیٹی جب آئے گی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائے گا, تو پھر ان یو کے جیسے ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہے یا کسی کا فیملی پرابلمز ہے یا پیپل آپٹ فار دی اسپیشلٹیز, ہم لوگوں نے آپٹ کیا تھا اسپیشلٹی کے لیے یو کے. تو انشاءاللہ things are going to be improved. I know ہم تھوڑے ہمارے کولیگ اس لیے فرسٹریٹڈ ہے کہ they have been doing the efforts for the last 25 years, لیکن everything have its time. میں ان سے زیادہ وہ ایکسائٹڈ تھا, لیکن when I met the PMC president انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ if your dream come true while you are alive, so that's never been a dream. تو انشاءاللہ یہ ایک ڈریم تھا جو ہمارے بڑوں نے دیکھا اور ابھی ٹائم آ رہا ہے, اینڈ انشاءاللہ ینگسٹر ہمیں سن رہے ہیں اینڈ دے آر
ہونی چاہیے. Why would a patient trust me جب اس کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اسپیشلسٹ کے پاس خود جائے؟ بیکاز میں اس کو ایسی سروس پرووائڈ کروں تاکہ وہ ہولسٹک بھی ہو, میری کیئر بھی اچھی ہو, میری کنسلٹیشن سکلز بھی اچھی ہو, میرا کلینک صاف بھی ہو, وہ وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ بھی سکے. اس کو تب جا کے وہ دیکھے گا کہ یار وائی وڈ آئی گو ٹو ہاسپٹل جہاں پہ مجھے دکے کھانے ہیں, میں نے رش میں بیٹھنا ہے, میں اپنے فیملی فزیشین کے پاس کیوں نہ جاؤں جو میرا پرابلم حل کر سکتا ہے. تو یس وی شوڈ ٹیک اے ریسپانسبلٹی, اور اس طرح کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے اور اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. رائٹ. جی سر, میں جی جی I'll take a comment from Dr. Farhan and then Dr. Shaila, آپ کا ایک کامنٹ لینا ہے. جی مائک دے دیں. میں نے جی آئی ایم فرام کراچی, مائی نیم از پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ, اور میں ڈاؤ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا انفیکشیس ڈیزیزز, اور ریسنٹلی آئی جوائن مائی فادرز لیب ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری. میں جو آپ کی سر بہت اچھی باتیں آپ نے سنی, پتہ نہیں کراچی میں تو فیملی فزیشنز تو بہت ہائی سمجھے جاتے ہیں, یو نو, اینڈ اور بہت ان کی رسپیکٹ ہے, اینڈ وی ریئلی آئی پرسنلی فیل دیٹ بہت ہی کرٹیکل ہے. لیکن جو آپ نے کمنٹس دیے, میں بڑا انٹرسٹنگ مجھے سمجھ میں آیا, کیونکہ ریسنٹلی ہمارا UHS میں ایک MOU سائن ہوا ہے پروفیسر جاوید اکرم صاحب کے ساتھ, اور مجھے یہاں سے پتہ چلا پروفیسر جاوید اکرم صاحب نے ہم سے کہا, کیونکہ یہاں پہ سر ہمارے ایوری تھرڈ ڈے ہمارا یا سیکنڈ ڈے CME سیشنز ہوتے ہیں فار فزیشنز, فیملی فزیشنز, اور ریگولر ہوتے ہیں, اس میں 100+ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہاسپٹل کے اسپیکرز بھی آتے ہیں, تو ایک بڑا اچھا ریفرل سسٹم بھی ہو گیا ہے. تو فیملی فزیشنز پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, اف دے نیڈ اے سرجری وہ سرجن کو بھیجتے ہیں, سرجن پھر پوسٹ آپ کے لیے واپس فزیشین کو بھیج دیتا ہے. تو جاوید صاحب نے ہمیں بلایا اور ہمیں وہاں پہ UHS میں بلایا اور بڑی عزت دی, مجھے کو چیئر کرایا, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیملی فزیشنز کو جو لاہور کے اندر بھی یہی پروگرامز ہونے چاہیے, اور بلکہ کراچی میں جو ہم CME سرٹیفکیٹس دیتے ہیں وہ اکریڈیٹیڈ نہیں ہوتے. اور پروفیسر جاوید اکرم نے کہا وی وانٹ ایسا سسٹم جس میں فیملی فزیشنز کو ٹاپ موسٹ پرائرٹی دی جائے, اور ہم چاہتے ہیں کہ UHS کے ان کو کریڈٹ آورز بھی دیے جائیں اور ایک پورا سسٹم کیا جائے. تو جسٹ ٹو ایز اے نیوٹرل اوپینین میری گزارش کہنے کی صرف یہ تھی کہ ایز فار ایز آئی کنسیڈر, اور میں نے تو کراچی میں آ کے سب کو بولا کہ انبلیویبل ہے, کبھی ڈاؤ یونیورسٹی میں ہم تھے, ہمیں تو کبھی انہوں نے کریڈٹ آورز کی آفر نہیں کی جتنی رسپیکٹ فیملی فزیشنز کی جاوید صاحب کر رہے تھے. تو جسٹ ٹو گیو اے سیکنڈ اوپینین. جی جی تھینک جی سر. جی not at all. پروفیسر جاوید اکرم صاحب نے جتنا فیملی میڈیسن کو لاہور میں سپورٹ کیا, اور ہمارے ان کے ساتھ کوئی دوستانہ مراسم یا کوئی کولیگز والے تعلقات نہیں ہیں, ہی از جسٹ لائک اے بگ بردر. آپ ڈاکٹر صاحب اگر کراچی میں ہیں, میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں, پاکستان میں جتنی آرگنائزیشن ہے, اسٹارٹنگ فرام پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی, پاکستان ہائپرٹینشن لیگ, آج چلیں یہ بھی اسی ایک لپیٹے میں آگے سارے میں, آج تک جتنی بھی پاکستان کے اندر کانفرنسز ہوتی ہیں نیشنل, آپ مجھے بتائیے کبھی کسی کانفرنس کے اندر آپ نے فیملی میڈیسن کے کسی شخص کو سٹیج پہ بیٹھے دیکھا ہو ان دا پینلسٹ, اور اس کی زیادہ سے زیادہ, جی اٹس ویری ریئر, اٹس ویری ریئر. تو اس وجہ سے یہ ہوا, ایک پیار بھرا, ایک محبت بھرا, ایک اس کو شکوہ نہ سمجھے, ایک مطلب ایک we are learning from each other. Thank you, sir. جاوید اکرم صاحب is an exception. He is an exception in all that. تھینک یو سر, آپ کا کامنٹ آ گیا. Yes, well. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر شیلا نسیم سے, پھر الطاف چیمہ صاحب, اور پھر کنکلوڈنگ ریمارکس اگر پروفیسر شہزاد آپ دے سکیں. جی السلام علیکم. I represent College of Family Medicine, Pakistan, the oldest organization of family physicians in the country, and which came into being in 1974. And the organization has been working, and it's also been providing CME. It was the first organization to be recognized by PMDC to give credit hours to for the CME courses. And we've been conducting structured CME programs since 2006. We've also been the co-convener of MRCGP international exams, and currently also we have trained about more than 3,000
1,000 general practitioners in our structured programs. And we stopped doing these face-to-face programs in 2014. Our last program was in 2014, which was the 14th revision course in family medicine. 2015, because of, we stopped it in 2019. After that was the 14th course that we did. And then we stopped because of the COVID. And now we planning to restart that. Now, why I'm saying all this is the challenges faced by family physicians. Now, interestingly, whatever we are doing here is sometimes it doesn't trickle down to the doctor who's sitting in Tandobago. I'm from rural Sindh. So the one who's sitting in Tandobago or in Sangar or in Sinjoro or in Shahpur Chakar, उन तक जो ये हम कह रहे हैं ना, ये मुश्किल से पहुंचता है. आइदर तो वो अपना वहाँ से आएँ, आके यहाँ अटेंड करें या किसी हॉस्पिटल में अटेंड करें. So the college is providing an online training programs. और हमारे online training programs में what we are looking at is to create a 5-star doctors जिनको at least 5 specialities के अंदर management कर सकते हों. Why we are aiming at it? Because in the rural areas no specialist will go. This doctor is the one who's providing everything. Very interestingly, we underestimate our family physicians because this is a person, GPs are not, you'll be surprised that they're more knowledgeable than what you think about them. They don't have any interaction with a teaching hospital, but they are providing services in that downtrodden area. And to top it all, we have this DAI programs, NGOs who are training quacks and creating quacks. And we also have to confront those. Instead of training those doctors who are sitting in those areas, what we are actually doing is we are taking matriculates and we are training them. Why? So these are some of the questions we need to ask ourselves. And we need to ask those people who are making the PC ones and making these, interventions. Why can't you train those doctors? They are there. So, excuse me. These are the challenges that we are facing. The other challenge, the biggest one that we face is, then when we do make these programs, nobody wants to recognize them. There's so much red tapeism. PMDC, जहाँ पे हम 90% GPs हैं, जो हम उनको fees pay कर रहे हैं, या PMC for that matter, but they will not recognize those programs जो specially doctors के लिए, जो कि general practice में हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं. Nobody wants to. Why? So this is something that I've been trying to question because they don't want to represent the general practitioner. So I feel that the challenge that we face is there's a look down attitude towards the general practitioners. ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया है. अब डॉक्टर अल्ताफ चीमा को मैंने मुझे एक लास्ट पॉइंट देना है. जनरल प्रैक्टिशनर्स को आप अंडर एस्टिमेट ना करें. दे आर स्मार्ट होलिस्टिक डॉक्टर्स हु आर सर्वाइविंग ऑन देयर ओन in all kinds of situations and provide cost-effective health care to communities. This is very interesting. Despite all that, हम उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाते हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, there are good specialists and there are bad specialists. There are good general practitioners, there are bad general practitioners. So you cannot, just एक दो की वजह से हर किसी का दिल चाहता है कि मैं जनरल प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन करूं, लेकिन it has to be a two-way traffic. So I think this is what we need to do. Thank you. Thank you. Thank you, madam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने PMDC का जिक्र किया, PMC का, तो I have noted down some recommendations. I'll quickly go through them. The family medicine be given a fair representation in PM and DC. The senior family physicians of good standing be involved in policy making. Nobody understands primary care better than a doctor who has worked in a primary care setting with all its difficulties and challenges. Family medicine departments be developed in all medical teaching hospitals. Scholarships be introduced for family physicians aspiring for postgraduate studies.
Institutions promoting CME for family physicians be supported by the government, both morally and financially. The family physicians who have undergone training and acquired diplomas of certificates like our MRCGP, MCPS, be given recognition by हमने बड़ी efforts के बाद MRCGP को recognize करवाया था PMC से. उसके बाद है, this will help raise the standard of healthcare at the primary level. There is a need to make full use of the services of the family physicians in programs like population planning, immunization, TB control, typhoid, malaria, dengue, and so on. Their services can always be asked for in case of natural disasters or calamities. The medical graduates be encouraged to consider family medicine as a career, where they can have an opportunity to work both as a professional and an entrepreneur. Interest-free or soft loans be provided to the family physicians to set up or upgrade their clinics. Thank you. Thank you, sir. I would like to request Dr. Shahzad Ali Khan, after listening to all the debate, if he can give some conclusion remarks, please. जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू. एक तो सॉरी फॉर बीइंग लेट. मेरा ख्याल है हमारा से 4 बजे का सेशन था, तो डॉक्टर सोमिया से मैंने पूछा तो वो प्रीपोन हो गया, 3 बजे हुए. मैं 2 बजे पहुंच गया था उसमें होटल में. अभी जितना मैंने सुना है, अब पहले तो मैं ये बताऊं कि वाई आई एम सिटिंग इन दिस फैमिली मेडिसिन सेशन. हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इज़ वन ऑफ द, आई थिंक इज़ द ओनली इन द फेडरल सेक्टर. फेडरल में हम वाहिद हैं जो फैमिली मेडिसिन का डिप्लोमा चला रहे हैं, और उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है एमएस में और फर्दर इसको आगे लेके जाना है. मैंने 2 कोहॉर्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं. तीसरा कोहॉर्ट हमने अभी एडमिशन किया है. 13 या 14 मई से फैमिली मेडिसिन का जो एक डिप्लोमा है उसका 3rd कोहॉर्ट शुरू हो जाएगा. यूएचएस में जावेद अकरम साहब ने शुरू किया था, उसके बाद हमने WHO के साथ इसकी लिंकेज डेवलप हुई थी. गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट करना चाह रही है और चाह रही थी पहले भी और अभी भी. उसकी वजह यह है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, जब आपका एक बगैर किसी सिस्टम के एक हेल्थ सिस्टम चल रहा हो, हेल्थ सिस्टम, सो कॉल्ड हेल्थ सिस्टम विदाउट अ सिस्टम, तो उसमें सारे के सारे लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं. तो उसमें जो जीपी जो होता है वो एक बेस लेवल पे, प्राइमरी केयर लेवल के ऊपर एक उसकी अपनी एक एम्पायर होती है, ठीक है ना. तो वहाँ पे वो काम शुरू करते हैं, वो किसी से इंटीग्रेट नहीं होते इतने ज़्यादा. तो आज जो यहाँ पे एक तो मेरा ये वजह हुई कि मैं चूँकि एक एकेडमिक सेशन में, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन से हूँ जिसका कि फैमिली मेडिसिन एक बड़ी हाई प्रायोरिटी में है. ख्वाजा साहब भी हमारे साथ आए हैं और लोग भी, हमने काफ़ी सारी फैमिली मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमने प्रेजेंट किया है. एंड वी आर आल्सो प्रमोटर ऑफ फैमिली मेडिसिन एजुकेशन, बिकॉज इन एनी फॉर्मल प्रॉपर सिस्टम, जब सिस्टम बन जाएगा, जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सेहत सहूलत प्रोग्राम के थ्रू हो या नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हो, या जो भी उसका नाम दें, उसके अंदर सबसे क्रिटिकल रोल जो होगा वो जीपी का होगा. मैं अपनी बात करूँ आपको, तो मैं खुद जो डॉक्टर बना हूँ ना, वो मैं एक अपने ख़ानदान का जो जीपी था उससे फैसिनेट होकर डॉक्टर बना था. और मेजॉरिटी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये उस स्मार्ट आदमी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेल मेंटेन्ड बंदे जीपी होते हैं अपने इलाके के ना, जो सबसे ज़्यादा टाई शाई सूट जो उन्होंने पहने होते हैं, स्मार्ट होते हैं, गोरे चिटे. जो जहन में जो बंदे के आता है ना एक अच्छा डॉक्टर, वो जीपी ही आता है जहन में. वो जो मेडिसिन में काम करते हैं, सर्जरी में काम करते हैं, अस्पतालों में उनका तो हाल ही बुरा होता है. दूसरी बात आपको मैं एक और मजे की बताऊं, ये दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड, नंबर 1. नंबर 2, आप सर्वे कर लें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो जीपी की है. दे आर द ओनली डॉक्टर. ये नस्लों की नस्लें खत्म हो जाती हैं और इनकी प्रैक्टिस चल रही होती है, ठीक है ना. एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज इनकी जो की टू हैप्पीनेस है ना, द की टू हैप्पीनेस इज सानू की. देयर की टू हैप्पीनेस इज सानू की. भाड़ में जाएं सारे के सारे, मेरा अपना क्लिनिक है, मेरा. दे डोंट वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट, दे डोंट वांट टू वर्क विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उनकी अपनी एक एम्पायर होती है, ठीक है. और वो बादशाह होते हैं अपने इलाके का. एमएनए भी उसके पास आता है, एमपी भी उसके पास आता है, लोकल लोग सारे से आते हैं. मेरा अपना अटक से मेरा ताल्लुक है. जो जीपी, मशहूर जीपी हैं वहाँ के, वो इतने बड़े पावरफुल हैं कि पॉलिटिशियन जाते हैं उनके क्लिनिक पे के साथ ही साढ़े हस्ते कोई बोल देना, साढ़े सपोर्ट हस्ते. सो दे हैव अ वेरी 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 हाई लेवल ऑफ फैन फॉलोइंग. दूसरी बात ये, बचपन में जिस तरह मैं 67 की मेरी पैदाइश है, तो मैं बचपन से 70s में अगर आप देखें तो द क्रिटिकल बहुत रोल था जीपी का, और सबसे ज़्यादा प्राइमरी केयर तो सारी जीपी ने संभाली हुई थी.
80s में ज़िया साहब के दौर में ये जब रिफॉर्म शुरू हुई ना BHU वाली, और उन्होंने उसको कैपिटलाइज करने की बजाय वो जो एक सबसे क्रिटिकल रोल था GP का, उसको निकाल दिया सिस्टम से और BHU को बना दिया प्राइमरी के, अर्बन में सेंटर बना दिए, डिस्पेंसरियां बना दी जहां पे यंग लड़के, इवन फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी उन्होंने भर्ती करके वहां पे लगाते थे डिस्पेंसरियों में, फाइनल ईयर मेडिकल कर रहे थे और वहां MO की ड्यूटी करते थे हॉस्पिटल्स में। तो ये 80s में ये हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फैमिली मेडिसिन की, फैमिली प्रैक्टिस मॉडल को, जिसको रिवाइव किया जा रहा है अभी दोबारा से। एक और चीज आप ध्यान में रखें कि ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, ये जो गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको सो कॉल्ड, उसको प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं कह सकते, प्राइमरी केयर कहना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर तो पूरा एक फलसफा है, प्राइमरी केयर कह लें, फर्स्ट लेवल केयर कह लें, जिसकी कोशिश है अर्बन और रूरल एरियाज में। उसके अंदर भी वो चीज़, वो मैग्नीट्यूड, वो एपिडेमिक हम नहीं कंट्रोल कर सकते जो एपिडेमिक हमारी आ चुकी है, NCDs की भी और इन्फेक्शंस की भी। अगर आप परसेंटेजेस देखें, पाकिस्तान में जो स्टैटिस्टिक्स कहती है 1 in 4 adult is hypertensive and 1 in 3 above the age of 40 is hypertensive। 13 से 16% डायबिटीज आ रही है आपकी, 9.7% हेपेटाइटिस C है, 4 to 5% हेपेटाइटिस B है, अनीमिया 44% वुमेन में, विटामिन D डेफिशिएंसी 80%। सो जो हमारी NCDs का आप देख लें, सारी के सारी जो फिगर्स हैं उसमें इतनी सीरियस इश्यूज हैं कि वो कोई भी प्राइमरी केयर दुनिया का उसको GP की मदद से नहीं खत्म कर सकता। जरूरत किस चीज की है, जो आखिर में सवाल लिखा, बल्कि सेकंड लाइन और थर्ड सवाल जो आप कह रहे हैं, आखिरी का पहले जवाब दे देता हूं। यस, दे आर डूइंग ऑल द जस्टिस टू देयर जॉब। मेरा ये वाहिद डॉक्टर है, ये वाहिद डॉक्टर है जो अपनी फैमिली की शादियां छोड़ देता है, जनाजे छोड़ देता है कि यार नहीं मेरे तो मरीज बैठे होने, या फटाफट शक्ल दिखा के वापस पहुंचता है, ठीक है। और इतनी डेडिकेशन से ये जॉब करता है कि जब ये 60 क्रॉस करता है तो ही बिकम सिनिकल, वो सिस्टम से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी जवानी लगाई होती है इस प्रैक्टिस मॉडल में। सो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा डेडिकेटेड जो डॉक्टर है, जो सबसे ज्यादा पेशेंट के साथ काम करता है, वो GP होता है और बहुत ज्यादा जस्टिस कर रहे हैं। हमें सिर्फ उनका जो थोड़ा सा माइंडसेट जो अभी जिसकी मैंने बात की, दे डोंट वांट टू इंटीग्रेट विद एनीवन एल्स। PSIM ने इनको हमने इसका एक पूरा सेशन दिया। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी रिकग्निशन है। मैं खुद हमारी एनुअल पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस होती है, हमने एक दफा फैमिली मेडिसिन का सेशन रखा था। अदरवाइज सेशन रखना किसी कॉन्फ्रेंस में इट इज अ वेरी कॉस्टली, प्लस इट्स अ वेरी, वो कहना चाहिए टाइम निकालना, सब कुछ करना, जब तक बहुत हाई इंपॉर्टेंस ना हो आप कॉन्फ्रेंस में सेशन रखते नहीं है। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी डेडिकेटेड सेशन ऑन फैमिली मेडिसिन। और जब मुझे रिक्वेस्ट की, जवेद साहब ने मुझे कॉल की, मैसेज किया, उन्होंने कहा इसका तुमने सेशन चेयर करना है, मैंने कहा जी बिल्कुल हाजिर है, हम आ जाएंगे। तो अब इसके अंदर और मैं चूंकि फेडरल गवर्नमेंट में हूँ इस्लामाबाद में, हमने हर जो इस वक्त प्लानिंग हो रही है ना, चाहे वो मैडम शैला कह रही थी PC1 हो या पॉलिसीज हो, अभी हमारी एक नई स्ट्रेटजी पे भी काम हो रहा है, नई हेल्थ पॉलिसी, जो पहले नेशनल हेल्थ विजन थी अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है। उसके अंदर भी एक पूरा का पूरा चैप्टर है फैमिली प्रैक्टिस मॉडल के ऊपर, GP मॉडल। इसके मुख्तलिफ नाम है, कोई इसको फैमिली प्रैक्टिस कहता है, कोई इसको जनरल प्रैक्टिशनर कहता है, कोई इसको फैमिली मेडिसिन कहता है, बट द मेन इसका जो बज़ वर्ड है वो GP है। GP के बगैर NHS नहीं चल रहा, GP के बगैर मेडिकेयर मेडिकेड सिस्टम नहीं चल रहा, कैनेडियन सिस्टम नहीं चल रहा, पाकिस्तान में कैसे कोई सिस्टम चलेगा। सो इन एनी एस्पेक्ट मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमने इस्लामाबाद में और गुजरांवाला में 2 जगहों पे छोटा सा एक पायलट किया हुआ है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का, जिसमें हम OPD शुरू करने से पहले, OPD में अभी आपको पता है कि इंडोर के लिए है सिर्फ, दी सेल्स प्रोग्राम इज ओनली फॉर सेलेक्ट पैकेजेस ऑफ इंडोर। OPD के लिए हमने एक पूरा पायलट हम रन कर रहे हैं और दैट इज लिंक्ड विद द GPs ऑफ दैट एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कामयाब हो जाता है और उसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, और वो गेटकीपर आप उनको कह लें, लेकिन मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा बेस्ट बंदा भी वही है जो कम्युनिटी में रहता है। सो आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन उनके साथ, आप कहते हैं 10,000 का BHU है, आप 10,000 की आबादी एक GP को अलॉट कर दें तो इट वुड बी मच बेटर देन अ BHU, बिकॉज BHU में बिल्डिंग का खर्चा, बाकी चीजें, ये तो सारा जबरदस्त इसका सिस्टम बनता है। सो ये आप जहन में रखें कि जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं उसमें फैमिली मेडिसिन के जो एग्जिस्टिंग जो फैमिली मेडिसिन के चाहे वो PAFP के लोग हों, अच्छा PFP की भी मैंने नोट किया, मुझे पहले नहीं पता था कि इनके अपने अंदर भी बड़ी सियासत है सर, वो इनके भी इन चैप्टर्स हैं, इनके भी चैप्टर्स हैं। वो नदीम साहब से पूछ लें, ख्वाजा साहब से, बाकियों से पूछ लें, एक को बुलाओ दूसरा नाराज हो जाता है, यार वो साढ़े आई नहीं हो तो उन्होंने क्यों बुलाया, फलाने ने क्यों बुलाया। सो द यूनिटी इन देमसेल्फ नीड्स टू बी मच मोर। और दूसरा ये कि निकल के आना, इंटीग्रेट करना, वॉलंटियर करना। गवर्नमेंट के साथ काम करने को तैयार नहीं होते, उन्हें पता है गवर्नमेंट पैसे ही नहीं देगी,
सीधी सी बात है, अगर तुसी सारे को काम ले लेना है, पैसे तुम दोगे नहीं बाद में, एतबार ही नहीं है गवर्नमेंट पे किसी को. सो ये एक चीज, 2-3 चीजें हैं जो मैंने जावेद अकरम साहब ने, आफ्ताब मोहसिन ने, सोमिया ने, हमने सब ने ये चीजें इसी तरह इसी टॉक के बाद एक आप बनाएं ब्रीफिंग पेपर, एक पॉलिसी ब्रीफ बनाएं. मेरी इसके बाद जाके मैंने, अब तो आपके कराची के हैं हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, मैंने उनसे टाइम लिया हुआ है. नेक्स्ट वीक आई विल गो एंड आई विल मीट हिम, आई विल प्रेजेंट दैट ब्रीफिंग पेपर. आप मुझे दें. आई एम योर एडवोकेट. थैंक यू वेरी मच. जी जी सर, आपका कमेंट, लेकिन कीप इट वेरी शॉर्ट प्लीज. थैंक यू. सर को माइक्रोफोन दे दें प्लीज. I think while we are waiting, I think on behalf of Family Medicine Fraternity, I would like to thank PSIM President Professor Javed Akram and his entire team who provided us this opportunity to debate. Assalamu alaikum. Dr. Muhammad Ayub Khan, working as Assistant Professor of Medicine, Sedu Group of Teaching Hospital. I'm representing from Swat. I'm the only person who is representing that community. While telling you about the family medicine, I'm not sure what is family medicine until now. There is no concept of family medicine over there. And we are still thinking that the people who are sitting is a GP over there, they can refer the patient very well than any person else that. جو ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں آپ کو ایک دوسرا حقیقت یہاں پہ بتا رہا ہوں فیملی فزیشین کے لیے. ہمارے کالج میں 2 پوسٹ ہے فیملی فزیشین کے, ایز اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر. فار لاسٹ 10 years those posts are vacant. Recently a person who is being selected on a said post the first conference of 18. So those societies is just created in 2016 onward. I have attended the last Pakistan Gastroenterology Society conference, 38 conference of Pakistan Society of Gastroenterology. So those our kids have poked to develop societies. So we have created like this ourselves. Now we are having 2 society, Pakistan Society of Internal Medicine and Pakistan Society of Physician. So I ask you, sir, why you are not going to develop your society, and you should ask us that we should present ourselves over there and we can give and refresh our knowledge. دوسرا میڈم نے ایک زبردست بات کی, لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتی ہے. ہم جب آپ سے پوچھتے کہ آپ کو یہ آتا ہے تو آپ انگلی نہیں اٹھاتے, اس لیے لوگ آپ کے اوپر انگلی اٹھاتے. آپ آگے آ جائے, ہم کو بلائے, ہم اپنا نالج شیئر کریں گے اور دوسری اسپیشلٹیز بھی اپنا نالج شیئر کریں گے. انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم آگے چلیں گے. اس کا میں جلدی جواب دے دیتا ہوں 1 سیکنڈ میں. سیکنڈ میں یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ کیا ہوا, تو اس کی مسئلہ یہی تھا کہ جو طارق میاں نے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ ریز کیا کہ جب آپ کا پبلک سروس کمیشن اس کی انڈکشن کر رہا تھا, انٹرویو کر رہا تھا, I was approached because I am head of the family medicine department at Khyber Medical University. So being a subject expert, I was never invited. کسی اور نے اس کو انٹرویو کیا اور اس کو جاب بھی دے دی. بعد میں پھر آپ کے پرنسپل صاحب نے مجھے کنٹیکٹ کیا کہ اس بندے کی تو ڈگری انٹرنل میڈیسن کی ہے, تو اب وہ بندہ میرے پاس آیا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم ڈپلوما فیملی میڈیسن میں ایڈمیشن دے رہے ہیں اور اس کو ہم فیملی فزیشین بنا کے آپ کے پاس پوسٹ کر دیں گے. تو ہمیں انکلوڈ کرے تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. On this positive note, I think we will end. Sorry, sir, ایک comment. Okay, thank you. ان کو مائکروفون دے دیں پلیز. سر بالکل شارٹ رکھیے گا کیونکہ پھر وہ بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہو جاتی ہے. جی. السلام علیکم. میں ڈاکٹر انوار محمد قریشی, حیدرآباد سے تعلق ہے. میں کسی اسپتال میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں, اور بہت ساری باتیں ہوئی, بڑی اچھی باتیں ہوئی. فیملی میڈیسن بیک بون ہے ہماری. لیکن دیکھیں, جب ہم MBBS کر کے نکلتے ہیں تو ہم صرف 2 فیلڈ میں ہاؤس جاب کرتے ہیں 6-6 مہینے کا,
اور اس کے بعد میں ہمارے اکثریتی جو اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد وہ جس اسپتال میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایز اے فیملی میڈیسن, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو یا گورنمنٹ سیکٹر کا ہو, لیکن وہ کام کرنے کے لیے تو بیٹھ جاتا ہے. میں اپنا ایکسپیرینس, اپنے اسٹوڈنٹس کا ایکسپیرینس بتانا چاہوں گا کہ جب فوری طور پر ہم جا کے جاب شروع کرتے ہیں ہاؤس جاب کے اگلے ہفتے میں, تو ہمارے پاس بہت سارے مختلف پیشنٹس آتے ہیں جن کو ہمیں ڈیل کرنا نہیں آتا, اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار, کوئی ٹریننگ کچھ بھی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ساری باتیں جو گورنمنٹ لیول پر ہو رہی ہیں اور سیٹیں کریٹ ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, وہ سب اپنی جگہ بالکل کارآمد چیزیں ہیں, لیکن ہمیں ایک توجہ دینی چاہیے. ایک نئے ڈاکٹر کو سب سے پہلے آپ فیملی میڈیسن کی ایک چھوٹی سی ٹریننگ تو دیں. اب اس کے لیے میں 2 شہروں کی بات کروں گا. میرا تعلق ہے حیدرآباد سے, اور اتفاق سے مجھے نیشنل ہیلتھ سروس اس میں جو سرجریز ہوتی ہیں جی پیز کی, اس کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے ڈائریکٹ آبزرویشن کا اور تھوڑا بہت کام کرنے کا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان بنے ہوئے 70-75 سال ہو گئے, آج تک یہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتی, کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, کسی کالج میں سیٹ نہیں ہوتی. حیدرآباد میں ہمارے پاس سندھ کے دوسرے گاؤں اور چھوٹے شہروں سے لوگ آتے ہیں. تو ایک میں کریڈٹ دوں گا پروفیسر پیکھا رام صاحب کو, جنہوں نے 2014 میں ڈپلوما فیملی ہیلتھ کیئر وہ اسٹارٹ کرایا اور لوگوں کو ایک اویئرنیس دی کہ فیملی میڈیسن بھی کوئی فیلڈ ہے, کوئی اسپیشلٹی ہے, اور آپ کو ضرورت کیوں ہے. اب اس میں آپ مینٹل ہیلتھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو عام طور پہ نہیں پڑھتے, اس میں آپ ریمیٹولوجی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ نیورولوجی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم جی پی شپ میں جا کے اپنا کام کرتے ہیں بغیر ٹریننگ کے, تو ہیزرڈس جو ہے وہ نقصان پیدا کرتے ہیں مریض کے لیے, اور وہ مریض جب سیکنڈری ٹرشری کیئر کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ پورا خاندان اس کا تکلیف میں آ جاتا ہے. تو ہمیں توجہ دینی چاہیے اس کی. سب سے پہلے پرائیویٹ لیول پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس سلسلے میں کام کر سکتا ہے. ہر شہر میں پی ایم اے ہوتا ہے, وہ ایک یہ دیں. دوسرا میں کریڈٹ دوں گا ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کو. حیدرآباد میں انہوں نے ایک لیب شروع کی آج سے 5 سال پہلے. کراچی اور حیدرآباد دونوں جگہوں پر مستقل وہ فیملی ڈاکٹرز کے لیے سی ایم ایز جاری رکھتے ہیں اپنے طور پر. تو اس طرح سے اپنے طور پر ہم بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو آگے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, تاکہ ایک سسٹم تو ٹھیک ہو, ایک سمجھ میں تو آئے نا کہ آپ ٹریٹ کس طرح کرنے جا رہے ہیں. اب جو LHWs ہوتی ہیں وہ بھی کوئکس کی طرح پورا ایک بورا بھر کے دواؤں کا لے جاتی ہیں اور وہ سب کام کر رہی ہوتی ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ.